Good morning, class 7. Good morning. How are you all? So, class, today we will do the question answers of chapter number 1, that is the story of Indian farming. As already we studied this chapter in the class. Okay, we studied about the agriculture, how we do agriculture, right? What is the structure of the soil formation, which type of soil is required for growing different type of crops. Okay, so today we will do the question answer. Our first oral question is, name some challenges that faced by farmers today. At the time of doing cropping, farmers face so many challenges. What are the challenges? First of that, first challenge is that he wants the seed of high variety. That means he must sow the seed of good quality. Then he will get the good production. Otherwise not. Then when he sow the seed, second is that fertilizers, manure. He wants to minimize the use of chemicals, right? Then which type of crop he is growing, which type of weather he wants, right? Rainfall is required in large quantity or sufficient rain is suitable for that crop. So there are so many, we can say, the challenges which face the farmer. Now what is the answer? Farmers face challenges such as irregular rainfall, right? Second, high cost of seeds. He wants the quality of the seed. If there is a high quality of seed, its price also high. Then fertilizers, manure equipments, then low crop prices. At what price he will sell his crop in the market? It's also important. Then lack of irrigation facility. He have to buy the tools of irrigations. Yes or no? Then natural disasters like flood and drought. It may occur drought or it may occur flood. In the both the situation, what will happen? Crop will destroy. Got it? Clear? Any doubt? Next. Next we will do the multiple choice question. Open your book. Do with me. All of you open your book. We will do the MCQ. Mark the answers in your book only. Okay? Now, the first one, the southwest monsoon. साउथ वेस्ट में कब होता है मानसून? कब रेनफॉल अगर होता है? When? June to September. What was the answer? It's option A. June to September. Very good. Now, the term side crop refers to crop grown in summer. In the side crops grow in summer. What was the answer? It's summer. Which option best supports sustainable farming? Organic farming. Very good. In the organic farming, we does not use any type of chemical fertilizers. Okay? Now, assertion and reasoning. What is the assertion? The Green Revolution helped India to achieve food self-sufficiency. What the assertion is saying? The Green Revolution helped India to achieve food self-sufficiency. Now, the reason, it promoted the use of high-yielding variety seeds, irrigation, and modern farming input. What was the answer? Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Now, let us explain it. Let us understand it. Okay. What was the assertion? Assertion is saying, when the Green Revolution occurred in India, it promoted the self-sufficiency. That means each farmer is capable of producing the large amount of wheat. Green Revolution is related to wheat production. Okay. When the Green Revolution occurred in India, each and every farmer is capable of producing the wheat in large quantity. मतलब सबके पास abundant quantity में wheat available था. सेल्फ कंजप्शन के लिए भी अवेलेबल था और मार्केट में सेल आउट करने के लिए भी अवेलेबल था. क्लियर यहाँ तक?
अब इसका रीजनिंग क्या कह रहा है? इट प्रोमोटेड द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। इससे क्या हुआ? यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज करे, इससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया? प्रोडक्शन इज increase. Production is increase. Irrigation equipments is also increase. The demand of irrigation equipments also increase in the city, or we can say in the country. And modern farming methods, now the farmers are started using the modern technology. Yes or no? So what was the answer? Both A and R are true, and R explains the A. Got it? Understand both assertion and reasoning? Clear? Dishan? Case-based question. Read the case study. The case study is given which is related to the rice. It is related to the rice. What was the case study? Look into your book. Meena is a farmer in Kerala. Meena is a farmer in Kerala. She grows rice using water from both monsoon rains and canals. For growing rice, what she is using? She is using monsoon rain and canal water also. She also add compost to her field instead of chemical fertilizer. I think you studied what is the compost in science. Recycle of the garbage, that is the compost. होता है कि नहीं होता है कि ड्राई लीव्स हो गए, आपका जो रॉ हो गया वेजिटेबल्स का, पील्स हो गए वेजिटेबल्स के, है ना, नेचुरली फर्टिलाइजर हम जिसको बोलते हैं, दैट इज द कंपोस्ट. ओके, so what the Meena is used? Meena use compost instead of chemical fertilizer. Now what was the first question? Look into your book. A question is asking that Meena is where is she is living? She is living in Kerala, and there is a sufficient water, plenty of water is there. There is no scarcity of water. So rice needed, what it needed? Around 2 centimeter rainfall it require. Okay. So rice require high rainfall and plenty of water. In Kerala, heavy monsoon rains and the canal irrigation provide suitable condition, making it ideal for rice cultivation. Clear? आ रहा है समझ में कि राइस कल्टीवेशन के लिए हमें क्या चाहिए? रेनफॉल अच्छा चाहिए, पानी अच्छा चाहिए. पानी वो कैनाल से भी यूज कर रही है और रेनफॉल का भी यूज में ले रही है. रहती भी वो केरला में है, तो वहां पे कभी पानी की स्केर्सिटी नहीं होगी. दैट्स व्हाई शी इज ग्रोइंग राइस देयर. क्लियर? एनी डाउट? हाउ डज यूजिंग कंपोस्ट हेल्प मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी? कंपोस्ट जो वो यूज कर रही है अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? Yesterday I told you, no? Yesterday I told you the topmost layer is very fertile. Yesterday we studied about that. The topmost layer of the earth is called the soil, and the topmost layer is very fertile. Compost that Meena is using, right? It helps to sustain soil fertility. इससे soil fertility sustain रहेगी, खत्म नहीं होगी. Compost add natural nutrients to the soil. Compost क्या है? It is also natural. Compost is what? It is also natural. And when it added to the soil, it increased what? Nutrients of the soil. What it increased? It increased the nutrients of the soil. It improved its structure and increases its water holding capacity. Water holding capacity will also increase. It also supports useful microorganisms, keeping the soil fertile. Clear? Got it? That the compost helps to remain the soil fertility, and it also increases the structure and the water holding capacity. Clear? Any doubt? You can ask me. No? Okay. Define intercropping and give one example. What is intercropping? Everybody knows about it. Yes. Who will give the answer? Yes, Manas. What is intercropping? Don't look at here. To grow two crops
2 or 3 crops at the same time in the same field. That means field भी same होना चाहिए और उसी field में आप 2 types की crops को grow कर रहे हो. When we are using or when we are growing multiple type of crops at the same time in the same field. Example like wheat and gram. I give you the example potato and tomato. Okay, flower and any vegetable. It may be quite possible you are growing the flower in your field. Okay, now list the 3 cropping seasons in India and name their main crops. What are the 3 type of crops we have? Rabi, Kharif and Zaid. Rabi, Kharif and Kharif. In the Kharif season, what we grow? Rice and maize. In the Rabi we grow. In the Zaid grow. I told you in the Zaid season, mainly the creeper plants grow. Which type of plants grow? Creeper. मैंने आपको बताया था या तो creeper होगा या it's climber. Grapes भी grow होते हैं Zaid में. Grapes क्या है? Climber है. Bale है. It needed a support to grow. Right? Watermelon is what? It is a creeper. Its fruit is very heavy, so we cannot hold it in any bamboo stick. हम उसको hold नहीं कर सकते bamboo stick पे. क्यों? क्योंकि उसका fruit क्या है? Heavy है. Grapes heavy नहीं होता है. Watermelon heavy होता है. Cucumber heavy होता है. आपका bottle gourd heavy होता है. आपका brinjal है. Brinjal तो आपका चलो वो है plant है. ठीक है? तो जितने भी आपके creepers and the climbers है, they all are included in the Zaid crop. Got it? Any doubt? Next. What was the main aim of the Green Revolution? The main aim of the Green Revolution is to increase food production and make India self-sufficient. कि हम अपने आप में इतने self-sufficient हो जाए इंडिया कि it does not need कि हमें किसी और से मांगना पड़े. आ गई बात समझ में? Clear है? What do you mean by drip irrigation? ड्रिपिंग सिस्टम देखा है आपने? वाटर सप्लाई कैसे होता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप. आपने देखा है ये? Look into your book if it is given or not. Drip irrigation system. It is given. Drip irrigation is a method where water is supplied drop by drop directly to the plant roots, saving water. क्या होता है बेटे? बैम्बूज लगे हुए होते हैं. ठीक है? नीचे इट्स योर फील्ड. ओके. बैम्बूज में क्या होता है? होल्स होते हैं. क्या होते हैं ये? होल्स होते हैं. तो उससे जो वाटर सप्लाई होता है, तो इस तरह से वाटर सप्लाई होता है कि वाटर आपका वेस्ट नहीं होता है. ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके पूरे फील्ड को वाटर मिल जाता है. आ रही बात समझ में? नहीं आया? नहीं आया. ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है बेटा? वाटर सप्लाई करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप. अब होल्स है तो अब इसमें क्या होगा? पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, एक साथ नहीं आएगा. अगर आप सिर्फ एक जगह होल्ड करोगे तो एक साथ आ जाएगा, लेकिन आप मल्टीपल होल्स करोगे छोटे छोटे और आप पानी इसको सप्लाई करोगे तो ये आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी प्रोवाइड करेगा. दैट इज द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. ठीक है? What is mean by rain-fed agriculture? Yesterday we studied rain-fed agriculture. When the agriculture is totally depend upon the जैसे rice हो गया. Take the example of the rice. If you are growing the rice, that means we are totally depend upon the rainfall. If the rain occur heavily, then the rice will grow. Or if the drought will occur or there is a scarcity of the water, that means our rice crop will destroy. Got it? Application based question. A farmer shift completely to the chemical fertilizers for the quick result. Predict 2. एक फार्मर था जो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता था, या हम कहें कि अपने क्रॉप्स को जल्दी ग्रो करना चाहता था. तो व्हाट ही हैड यूज्ड द केमिकल फर्टिलाइजर.
Now what will happen? The nutrients will damage. The nutrients will damage. Possible long-term effect on the soil and the water and suggests one safer alternative. Continuous use of chemical fertilizer can cause soil degradation. What will happen? The topmost layer is very required for growing the crop. If the topmost layer is vanished, it's removed, then what will happen? Soil degradation will start. Soil degrade होना start कर देगी क्योंकि topmost layer में जितने भी nutrients थे वो chemical की वजह से क्या हो गए? डैमेज हो गए. अगर वो डैमेज हो गए न्यूट्रिएंट्स तो क्या आप किसी भी क्रॉप को किसी भी प्लांट को ग्रो कर पाओगे? डे बाय डे वो कैसा होता जाएगा? वो डैमेज होता जाएगा. It can also lead to water pollution as chemicals mix with the groundwater. क्या होगा? हमारा ग्राउंड वाटर लेवल में क्या होगा? केमिकल जाना स्टार्ट हो जाएगा. होगा कि नहीं? हम जो भी पानी हमारे प्लांट्स में देते हैं तो उसका पानी कहाँ जाके सस्टेन होता है? ग्राउंड वाटर में. ग्राउंड वाटर में धीरे धीरे केमिकल जाएगा कि नहीं जाएगा? पानी के साथ जाएगा. तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कैसा हो जाएगा? केमिकल वाला. वो भी डैमेज होता जाएगा, पॉल्यूटेड होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? दैट इज द रीजन. अ सेफर अल्टरनेटिव इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? We will start doing organic farming and using compost and natural manure instead of chemical fertilizer. What will you start using? Compost and natural manure instead of chemical fertilizer. Clear? Any doubt? Long answer. Explain how India's diverse climate and the soil type influence the variety of crops grown across the country. Use suitable example from different regions. Now, what was the question? Question is saying that India has a various diverse climate, as we already studied in the chapter also, right? Different variety of soils is available, and in different variety of soil, different type of crops grown, right? Now, answer is that different climate. India has diverse climate and soil which influence crop variety. In the red soil, different type of crops grown. In the alluvial soil, different type of crop grown. Right? In the black soil, different type of crop is grown. Right? So it requires soil, rainfall, and temperature. For all the crops, same temperature is required? No. In every crop, the same rainfall is required. For example, Punjab grows wheat due to the fertile alluvial soil, while the Kerala grows rice due to heavy rainfall. In dry areas like Rajasthan, crops like bajra are grown. Thus, climate and soil determine crop pattern. In the Rajasthan, we grow bajra, jowar, because we don't have too much rainfall, and both these crops also does not require too much heavy rainfall. It is easily growing Rajasthan. Clear? Is it clear or not? Describe the role of monsoon system in Indian agriculture. How does dependence on monsoon create both opportunities and risks for the farmer? Yesterday I gave you the example. If the wheat is require heavy rainfall, but instead of heavy rainfall there is a flood, what will happen? Rain destroy. And instead of flood, drought will occur. Then what will happen? In both the condition, the rice will destroy. So what it require? Sufficient rainfall only. Sufficient rainfall. The monsoon provides essential water for agriculture, especially for the kharif crop. A good monsoon leads to better production and income. क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा ड्रॉट मान लो, या तो ड्रॉट हो गया या फ्लड हो गया, दोनों कंडीशन में फार्मर क्या होगा? सफर करेगा. उसका प्रोडक्शन हो पाएगा? उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा. क्यों? बिकॉज द राइस क्रॉप ruined or damaged. However, irregular rainfall can cause drought or flood, damaging crops. Thus, monsoon brings both benefit and risk. इसलिए मानसून जो है वो कभी बेनिफिट भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, और कई बार
अनफेवरेबल मतलब रिस्क भी हो सकता है। क्लियर है, समझ आ रहा है, कोई डाउट? डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सपोर्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर। क्या गवर्नमेंट क्या रोल पर प्ले करेगा? द गवर्नमेंट सपोर्ट्स फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड irrigation facilities and modern technology. It ensures fair prices through MSP and offer loans and insurance. क्या करेगा? जिन फार्मर्स को वाकई में लोन की रिक्वायरमेंट है ग्रो करने की, तो गवर्नमेंट विल सप्लाई देम लोन एट वेरी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट and make them sure that is the market. MSP is what? Market support price. What is MSP? Market support price. भाई आपने इतना प्रोडक्शन कर लिया है, अब उसको क्या करोगे आप? मार्केट में सेल करेंगे। तो आपको इतना तो अर्न होना चाहिए जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और उससे ज्यादा होगा तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो हर फार्मर को ये चाहिए कि नहीं चाहिए? फार्मर, एवरी फार्मर नीडेड व्हाट? प्रॉफिट। एवरी फार्मर नीड क्लियर। ट्रेस द अर्ली हिस्ट्री ऑफ फार्मिंग इन इंडिया यूजिंग आर्कोलॉजिकल एविडेंस। पहले क्या होता था? आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता पड़ा कि हमारे यहाँ पे राइस और व्हीट ग्रो होता था? क्या प्रूफ मिले? फार्मिंग इन इंडिया began long ago. Evidence from the मेहरगढ़ shows early cultivation of crops and domestication of animals. मेहरगढ़ जो जगह थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ही था ना ये, वहां पे उनको ये एविडेंस मिला कि वहां के लोग एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे। एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना मतलब एज ए पेट एनिमल उनको रखना, है ना? उनसे क्या करना? फील्ड में काम करवाना। डोमेस्टिकेशन वर्क हो गया जिसका उनसे फील्ड में काम करवा। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की क्रॉप्स वहां पे कल्टीवेट हो रही थी। पीपल शिफ्टेड फ्रॉम हंटिंग टू सेटलिंग फार्मिंग। पहले क्या करता था इंसान? कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में क्या खाता था? एनिमल्स की हंटिंग करता था। उसको नहीं पता था कि क्या ग्रो करना है, कैसे खाना है, उसको कैसे ग्रो करना है, क्या उसको पता था? नहीं पता। यूजिंग टूल्स एंड स्टोरिंग ग्रेन्स। उसने टूल्स पहले उसके कैसे हुआ करते थे? सारे स्टोन से बने हुए होते थे टूल। किससे बने हुए होते थे? स्टोन से बने हुए टूल्स होते थे। उनको टूल्स को उसका यूज करना स्टार्ट किया और ग्रेनिंग फार्मिंग करना स्टार्ट किया। मार्किंग द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, और तभी से फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर पैटर्न स्टार्ट हुआ। पहले क्या करता था आदमी? क्या करता था इंसान? फॉरेस्ट को क्लियर करके एक पैच ऑफ लैंड तैयार करता था और उसके ऊपर कल्टीवेशन करता था। पहले इस तरह से फील्ड नहीं होती थी हमारे पास, हम पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते थे अपने एग्रीकल्चर कर। क्लियर हो गया? The Green Revolution transformed Indian agriculture. Analyze the major achievements and the long-term challenges. The Green Revolution हुआ start, तो एक हम कहें कि इंडियन एग्रीकल्चर में बूम अप आ गया। क्या बूम अप आया? ऐसा क्या हुआ उस वक्त? The Green Revolution increased food production by using HYV सीड्स। हमने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज करना स्टार्ट किया, जिससे हमारी क्या हुई? क्रॉप की क्वालिटी अच्छी हुई, प्रोडक्शन अच्छा हुआ। हम कहते हैं ना ये ग्रेन अच्छा है और ये ग्रेन अच्छा नहीं है, ये वाला राइस अच्छा है, ये वाला राइस अच्छा नहीं है। तो वो अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास अच्छी क्वालिटी का सीड ग्रो नहीं किया। समझ आ रही है बात? It made India self-sufficient in food grains. However, it caused problem like soil degradation. इससे और क्या challenges आए ग्रीन रिवोल्यूशन से? ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ? सॉइल डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो क्या सॉइल की फर्टिलिटी खत्म नहीं होगी? आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कंटिन्यूसली काम कर रहे हो तो आपका एनर्जी लेवल सेम रहेगा? लो होता चला जाएगा। वही सेम थिंग हमारी सॉइल के साथ होता है। अगर आप सॉइल पर रेगुलर रेगुलर उसके ऊपर क्रॉप ग्रो करते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सॉइल डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब हो गया आपके जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होने लगा है? वैनिश होने लगा है, खत्म होने लगा। आ रही बात समझ में? वाटर डेप्लीशन, वाटर का लेवल डाउन हो जाएगा।
पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा और जिससे क्या होगा, फार्मर्स में इनइक्वालिटी अराइजेस हो जाएगी. क्लियर है? एनी डाउट? तो क्लास, दिस चैप्टर इज ओवर. क्वेश्चन आंसर्स आर ओवर. Do study at home. Do question answer at home. Okay. In the next session, we will do our next step. Okay, class.